Hi, Akarshan. Thank you so much for being a part of my podcast. I'm starting this series with you. It's called Corporate Roast with Symbol. And here we're going to talk about all things corporate. We're going to have fun. मैंने सोचा कि बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशंस हो गई थोड़े मस्ती मजाक भी करते हैं और who better than you to start this conversation with. बताना चाहती हूँ कि हमारा आज का टॉपिक है जो व्हाट द बॉस थिंग्स एंड व्हाट द बॉस सेज। तो हमने सोचा आपको पॉडकास्ट पे लाके थोड़ा और लोगों को क्या बोलते हैं उसको एंटरटेनमेंट दे। वाह, मेरा स्ट्रगल किसी का एंटरटेनमेंट बन रहा है। हाउ आयरॉनिक इज दैट, राइट? मतलब दैट्स व्हाट एडवर्टाइजिंग डज। अरे तो ऑनेस्टली लाइक मेरे मतलब मेरा एक मैनेजर था, मतलब था ऑफ कोर्स। सो दिस पर्सन यूज्ड टू ऑलवेज कम इन एंड से buckle up Akarshan, and I was new in the industry like 2016, मतलब pious mind, pure heart, unadulterated. And I used to always buckle up my belt ऐसा क्या है? इसको इसको क्या ऑब्सेशन क्या है? Why does this person focus ऐसा एकदम? Why is he like targeting on my waist? Like ऐसा चल रहा है. So and buckle up वाला एक तरीका था. Then someone told me कि यार buckle up का मतलब होता है भाई जल्दी कर, नया काम देना है उसको. तो I said, oh, that's buckle up. And second most this jargon which pierces straight ऐसा across the heart rather. यार ये बात होती है, we are a family. Oh my तू मेरा God. you are not my team member. You are like my little brother, and I always remember the eldest son in the family. उसका काम sorted होता है. जीजा को गाड़ी में बिठाना, ब्रेड लाना, दूध लाना, मिठाई लेकर आना, छत से कपड़े उतार कर लाना, पानी की टंकी बंद करना. All these things now I realize when I am sending his emails on his phone from his phone. मतलब ऐसा समझ एनालॉजी. then I उसका अप्रेजल है and I am feeling like कि क्या क्या किया मैंने, like I am feeling the ऐसा KRA वाला sheet. That was one thing. But on the other side, I found like one gem of a manager as well. Not all managers are bad, Simal. Malla, I understand that advertising and working just makes you feel close to the dementors, but honestly there are mentors as well. So I have been fortunate enough, and Nice. no one was working with this radio network only. So like my immediate manager, he was nice, like gem of a person. Now there are two types of people. Once you get to know that you are going through a rough patch in your personal life, what will a typical manager do? Matlab, they'll drag you to the HR, they'll drag you they'll try to play that sasta game of putting you in PIP and and just kicking your bum out. On the other side, I had this one gem of a manager. भाई उस बंदे ने like ऐसा बोलते हैं ना कि a manager takes bullets for you. So this person honestly took every sort of criticism coming in from the upline, the bottom line, Oh, and even my peers as well. So this person used to इसके पास feedback जैसे जाता है. So he never used to tell me. He because obviously if you are low and then you get across कि ऐसा ऐसा तेरे टीम वाले जिनके साथ तू एक प्लेट में खा रहा है, या these guys who are fighting for paratha or chola bhatura in your plate. Now these guys end up putting up you in a blind spot or throwing you under the bus. So this that's true. person actually did a lot for me, and honestly that helped me survive in the system. वरना मेरा तो corporate से हो जाता भाई. You spoke about your boss and you said that not a lot of bosses take bullets for you, and that has also helped you give that support in your personal struggles, because जब आपका ऑफिस में आप खुश नहीं होते हो या ऑफिस में आपको इतना प्रेशर मिलता है तो वो आप घर लेकर भी आते हो, एंड इट एड्स ऑन टू द एग्जिस्टिंग प्रेशर दैट यू आर ऑलरेडी फेसिंग. This is why one of the reasons, Akarshan, is that we joke about this, but why leadership is so important, why the kind of people you work with are so important. आप हम लोग तो ऐसे मस्ती मजाक करते रहते हैं, because अब क्या बोलते हैं ना कि वो रो रो कर साथ में सब हंस लेते हैं, वो वाली बात हो गई है. बट एट द एंड ऑफ द डे द क्वेश्चन इज कि आप कैसी लीडरशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं. आपकी टीम है, आप आगे बढ़ेंगे, आपके अंडर आएंगे जूनियर्स हु वांट टू लर्न फ्रॉम यू. नाउ यू हैव टू ऑप्शंस. वन ऑप्शन इज कि आप वो आगे बढ़ाते रहें, वो जो हंटर है, ठीक है, आप भी आगे मारते रहें ताकि उनको सिखाएं.
या दूसरा आपका ये, आप उन्हें समझाएं कि देखो ये तो तुम्हारा रोल है, अब तुम ये कैसे करो ये तुम पे है। कैसा लगता है कि कितना रोल प्ले करता है एक बॉस कल्चर सेटिंग में। दिस इज फॉर हम्म। पीपल हु आर जस्ट जॉइनिंग और हु थिंक एडवर्टाइजिंग इज लाइक सम वेरी कूल प्लेस टू बी इन। ऐसा सोच के आते हैं सब ना, कि सिगरेट पियेंगे, टैटू बनाएंगे, बाल कलर करेंगे और बस। हाँ ये तो हम So सब we ने have a अपनी अपनी saying, मतलब इनिशिएशन कर रखी है। हाँ यार, डोंट वांट टू साउंड इनसेंसिटिव, बट हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन मतलब the more the hair color, the more depressed the person is, the more successful Yes, advertising career they will have. और से यार, एक तो ये मैनेजर्स होने पे it doesn't imply that you have to overwork, to सही set up an बात है, example to your juniors बात कि है। भाई मैं तो 9 बजे आ गया था, आप आ रहे हैं 9:59 पे। भाई तू 9 बजे आ रहा है क्योंकि तू बस 8:30 बजे तू अपनी बीवी से लड़के आया है, तू भेजा गया है ऑफिस में, तू खुशी से नहीं आ रहा है। यू आर ओवर वर्किंग एंड यू कैन नॉट इम्पोज how your basically body cycle, or how your karmic cycle works. So as a manager, it's more important, like, please do not compare your team members, and especially your life with respect to the one who has joined or who has like 3 4 5 years of experience in the career. By we per se, like, we are now in 30s if I'm not mistaken, right? So we come in, we joined in advertising because हमें survive करना था, नो सही एक बात एक है। एक माँ के दूध का कर्ज था, दूध वाले का कर्ज था, होम लोन था, वी केम इन आउट ऑफ ऑब्लिगेशंस टू डू, एंड नाउ दीज यंग फोक्स, दे डू नॉट कम टू सर्वाइव, दे कम टू सस्टेन, बिकॉज लाइक वो Yes, सर्वाइवल वाला तो फेज उनके पेरेंट्स ने उनके लिए बेस रेडी कर दिया है ना। तो सेट उनके कर लिए दिया है, हसल सही रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उनके लिए हसल है कि हमें हमें पब हॉपिंग करनी है, हमें हमें कैफे हॉपिंग करनी है, हमें हमें बोहो दिखना है, हमें सोबो दिखना है, सो as a manager per se, you'll have to understand what is the individual or your team member's needs as well, and why is he or her working. So bhai, you cannot impose your choices in someone else's, like, सही। as a manager, you are not supposed to, like, plant in your dreams to your downliner, and that is why we observe कितना ज्यादा iteration बढ़ गया है यार, like, मतलब loyalty in terms of people or in terms of working, in terms of relationships has become a myth. People are switching jobs like 3 3 महीने पे। भाई क्या करे, जब सही मैनेजर आप बन जाएगा, या लाइक मैनेजर एक्ट्स लाइक योर पोजेसिव पार्टनर, तो एनीबॉडी इज गोइंग टू फ्रीक आउट एंड लीव। सो दैट्स या मोर इम्पोर्टेंट। बाउंड्रीज, वेरी ट्रू। मतलब एजेंसी लाइफ में बाउंड्रीज तो कभी हमने सेट करवाई ही नहीं है, इन द सेंस ऑफ पर्सनल बाउंड्रीज। आप लीव पे जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आइडियली नो वन इज सपोज टू आस्क यू दैट, राइट? कि आप कहाँ जा रहे हो, आप लंच ब्रेक पे जा रहे हो तो भैया आपने कितनी देर के लिए जा रहे हो, या द फैक्ट दैट दे थिंक दैट दे ओ यू दैट सॉर्ट ऑफ एन एक्सप्लेनेशन actually is what is changing now, because these people, the Gen Z, as we speak of, demands personal space, demands रिस्पेक्ट एंड नॉट जस्ट पे चेक्स। हमारे में तो रिस्पेक्ट था, मतलब क्या रिस्पेक्ट, बॉस जब तक नहीं जाते हैं तब तक हम नहीं जाएंगे, है ना? दिस वाज सच एन अनसेड रूल कि भैया अभी बॉस नहीं जाएगा तो सास हम नहीं कल्चर जा हो चुका सकते। था यार, सास कल्चर हो चुका था, like, पहले ये खाएंगे फिर मैं खाऊंगा। फिर मैं खाऊंगी, सही बात है। जो उनके एंड सडनली समवन हु गेट्स द टाइटल ऑफ अ मैनेजर सडनली हैज दिस, इसे वो बोलते हैं ना, वो नागमणि मिल गया, और मतलब वो फुल मतलब ऐसे चेंज होकर देन दे बिकम लाइक, नो व्हाट, आई हैव टू act a certain way. So it's almost like a role is already, a templatized role is decided for you. When you enter that role you have to play that role, right? Yeah. और कुछ कुछ वर्ड्स जैसे कि आकर्षण, हम ऐसा बोले जाऊंगी कि बड़े हुए हैं सुनते सुनते एडवर्टाइजिंग में, जैसे कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेके आओ। Out of the अब box ideas. ऐसा कौन सा बॉक्स है मुझे जानना है, और इस बॉक्स से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि दम घुट रहा है आपका उस बॉक्स के अंदर, तो आप कहाँ से लेकर आओ ये आउट ऑफ द ये बॉक्स कॉफी आइडिया? बॉक्स है, ये बॉक्स। Yes, this is a box you'll go back to when you are done with like 3 4 years inside it. What are some, like I said, out of the box is one word, and things that we have तो grown up बोल सबसे रही हूँ मैं बड़ा, इसको। मतलब हमारे पड़ोसी देश से भी बड़ा रेड फ्लैग, एसैप और अर्जेंट। भाई इफ आई ऐड दीज Oh, टू वर्ड्स इन एनी रैंडम कॉन्वर्सेशन, बंदे का बीपी ऐसा शूट अप हो जाएगा, वो हो सही जाएगा बात है, सही कॉशियस, बात। तो प्रोडक्टिविटी की तो डिलीवरी हो जाएगी।
सीरियसली मतलब ये एसएप, अर्जेंट, ईओडी, डेडलाइन, भाई प्रायोरिटी बोल देना, डेडलाइन बोल के व्हाई डू यू हैव टू साउंड सो नार्सिस्टिक कि मतलब हमने एडवर्टाइजिंग नहीं, नो ऑफेंस, हमने मिलिट्री ज्वाइन की है एंड देन देयर इज एन इन्वेजन। भाई इट्स जस्ट अ फ्रीकिंग फॉरवर्ड का क्रिएटिव, भाई इट कैन वेट। कल सुबह भी सूरज निकलेगा, क्लाइंट का बिस्किट या सरिया बेचना रुक नहीं रहा है। People who are buying this toothpaste will buy no matter what. It is your priority. भाई ये तेरा लफड़ा है कि you didn't roll out the brief to the teammates on time. You know, you were having your weekend and then you were busy. Let's circle back. हैं? क्यों? मैं क्यों करूं circle back? मैं gymnast हूँ. Why should we? That's true. And even per se as managers, भाई you, I don't know if you brush twice a day or not, पर दिन में 2 बार घड़ी देखना सीख ले. You cannot roll out a brief on a Friday 7:30 p.m. and then Monday को सुबह 10 बजे से यार ये तो फ्राइडे को भेजा था, अभी तक नहीं हुआ. सही बात है, सही बात है. मतलब क्या? Yes. मतलब क्या? Yes. कौन सा ऐसा मतलब ट्रस्ट में Yes. लाइक दिस प्रोडक्ट मैनेजर्स, ब्रांड मैनेजर्स, क्लाइंट साइड वाले, स्पेशली एमबीए वाले और दिस इंजीनियरिंग गाइस हु कम इनटू एडवर्टाइजिंग, भाइयों कुछ देखो ना देखो, प्लीज दिन में 2 बार घड़ी देखना सीख लो. I think we can do something more than this. Yeah, we can do better. Oh, भाई इसमें yes. वी साइलेंट होता है. बिल्कुल सही बात. मैनेजर ये भी तो बोलते हैं कि मुझे मतलब जब आप आइडिया लेके जाते हैं कि मतलब इसमें मजा नहीं आ रहा, इसमें वो वायरल फैक्टर नहीं है, तो मतलब ये वायरल फैक्टर कहाँ से लाया जाए इज द क्वेश्चन. वायरल फैक्टर लाने के लिए पता है, I think we should travel more in the Delhi metro. Nice. Nice. Can you make the copy crisp? भाई मैंने 3 साल की आर्ट्स की डिग्री ली, 2 साल का राइटिंग डिप्लोमा लिया, 1 साल का महंगा ऑनलाइन कोर्स लिया, मैंने 15-20 लाख रुपए फूके. मैं क्या भजिया वाला हूँ? No offense, but चाय वाला are becoming leaders, but क्या भजिया वाला can become a copywriter? ये कैसा इंसाफ है मेरा, मतलब सिंगल ऐसा क्यों है? मैं क्यों करूँ कॉपी क्रिस्प? मैं क्यों करूँ? बट आपको नहीं ऐसा लगता है कि जब जैसे कि मान लो मैं मैनेजर हूं और मैं आपको मैनेजर बना रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एजेंसी में देयर इज दिस सीक्रेट इनिशिएशन दैट हैपेंस वेयर दे पास ऑन these words to the next manager saying आपको ये यूज करना है, आपको अपने टीम की जान ऐसे खानी है, और फिर आप मतलब आगे बढ़ेंगे. मतलब कि जो लोग सुन रहे हैं आप उन्हें बताएं एज अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, कि मतलब व्हाट डज इट मीन टू बी डू बेटर. I think boss, manager, not manager, being a human is a crux to it. And like I said, we are joking about this, but we have spent so many nights and days kind of questioning, where we are, giving up our physical health, our mental health, our all kinds of health, our personal relationship. क्या कितने सारे सिंगल लोग होते हैं एडवर्टाइजिंग में, कैसे रह जाते हैं सिंगल, बिकॉज टाइम ही नहीं है आपको, है ना. आप अपने माँ बाप को ही इतने मुश्किल से देख पाते हो, मतलब पार्टनर तो क्या बात. So I just wanted to kind of wrap this up with a thought for people to think about. And with you being there, you have experience, you've worked with people, you've mentored also people under you. What kind of a thing you'd like to say to them in terms of how an ideal manager should be? Yeah. So couple of things probably. Pehla, like what schooling taught us. You know, sounds very formal as a word, but honestly, discipline. Discipline is not like, you come in on time. Discipline is not coming that you leave on time. You just live by the clock. Discipline is something you have to understand. Ki bhai, there are certain roles and responsibilities which you have as an employee, which you have as a person, as a son, as a daughter, as a parent, as a partner. Please do not sacrifice anything at the cost ki yaar, a deck cannot decide your fate. Simple सी बात है भाई. And again, if you cannot change the company, please change the company. Simple सी चीज है यार. You know? Yes. You'll have to be disciplined and vigilant enough कि यार जैसे हम ब्रांड गाइडलाइंस को अडर करते हैं, या फिर लाइक हम ब्रांड प्लग्स पे फोकस करते हैं. भाई मेरा इंडिविजुअल ब्रांड प्लग क्या है? I wasn't born to be
a passenger princess, but I'm not even a corporate slave. You know. Mm. और दूसरा, as a new manager or as a person who's coming like new into advertising, यार, unfortunately, I'll take this blame, like, symbol from like everyone. We have kind of glorified incompetency. अगर तुम्हारा मैनेजर तुम्हारे काम पर एक ऑनेस्ट फीडबैक भी दे रहा है, फ्रेंड, ओ दिस इज सो टॉक्सिक एंड नैगिंग, ये ब्रांड के कीवर्ड्स नहीं है, कि अगर तुम्हारा मैनेजर तुम्हें बेसिकली पूछ ले रहा है भाई वो डेक का क्या हुआ, या फिर यार वो उसको भेजना है, दैट डजंट मीन दैट द पर्सन इज काइंड ऑफ नैगिंग. भाई उसका वो काम है, द मैनेजर इज गेटिंग पेड फॉर दैट, एंड अनफॉर्चुनेटली भाई, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो उसकी मर्सिडीज कैसे आएगी. So we have learned one thing, सिंबल, पता है कि एक इंसान, मतलब let's assume this manager is X, ये काम चोरी या फिर ये सारी चीजें तब तक करेगा जब तक उसका पेट नहीं भर जाएगा. Once that person reaches that brim, like, maybe वो प्रमोट होके VP बन गया, उसके बाद he'll give it up, like, you'll find, like, a very, like, that's probably, like, Siddharth becoming Gautam Buddha. अचानक से you find that, that your manager takes a U-turn because again his personal goals are met. So as of now, per se, or as a new manager, when you have, like, you got an escalated level of roles and responsibilities, जिनके साथ तुम कल खाते थे, your teammates are now reporting to you. That is a lot of a personal and emotional and professional turbulence. That kind of makes this relationship a more complex and a puzzle. So as a manager, by of ours, the max you can do is please continue to be that jovial or that quirky or that khadus person which you have been. Your job doesn't define you as a person. It's more important to keep good terms with people rather than the company, because apparently company एक fictitious चीज होती है, मुझे ऐसा लगता है. It's the people whom you choose to work with. So even, like, मैं भी अपने professional life में I came back to my ex. I joined my previous workplace दोबारा से. I have been asking a lot of, like, questions with myself. A lot of peers have asked this question, that why did you choose back to go to your ex? But then, sometimes you realize कि यार, this is not because the ex's name is this is the kind of the feeling that they give you. तुम्हें पता है कि तुम्हें इन लोगों का मुंह देखना है तो तुम गाली नहीं दोगे. So, like, as a new manager, please try to keep that sort of relationship with your teammates going. Sticking by the rules is good. Sticking by the brand rules is not. हर समय you cannot thopify your ideologies to any team member's life. मतलब किसी को बिरयानी में आलू पसंद है, किसी को बिरयानी में रायता. As simple as that. You cannot thopify it कि तू रायता ही लेगा. You cannot have आलू. So yeah, that's what I wanna do. And इसको अपन टेक्निकल भाषा में कहते हैं, like, brand bible. brand bible for a manager. और इसी तरह से मैंने आपको केची दे दिया. Now you have the entire job. You can take the download and the handover from me. Jargon. ये बोल के मैं निकल जाऊंगा for a better paycheck and a better place. And आप यहीं पे रहिए और ये सब हैंडल करिए. नहीं, but jokes apart, Akarshan, I think that's so important, and I'm glad that you put forward both the perspectives, that it's not just shaming the manager because now you have a voice. How are you using that voice? Are you misusing it? कि नहीं भाई, अब तो मैं, मतलब, see, the idea is for everyone to leave their ego outside the door and then enter. ना वो मैनेजर हो, चाहे वो न्यू ज्वाइनिंग हो, चाहे वो कोई भी हो. और जब आप वैसे रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हैं, लाइक यू सेड दैट यू कमिंग बैक टू an next place that you left is because of the people. आप बॉस है, माँ या बाप ना बनिए. मैं ये मान के चलूंगी कि ये हमारी टेक अवे है. be a boss, be a good one. Don't try to play more roles than what you're supposed to. And if you do that, I guess, then it works out in your favor. सही बात है, सही बात. आप लिंक्डइन से स्टार्ट, आपकी लिंक्डइन से जोक्स अपार्ट, आकर्षण, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. आई थिंक हमने, you are always in your character, so it's always fun to talk to you. It's more smooth and fun and easygoing and all those things. वैसे थोड़ा एंड में वैलिडेशन देने वाली लाइन तो बोलनी पड़ेगी. करने लगूंगा ऐसा सिंबल, ऐसा मत कीजिए, मतलब नहीं, मैं चाहती हूँ तुम्हारा पूरा दिन ऐसा जाए. to send me the MOMs, like, minutes.